So we will learn this, right? So let's just have a look on the code. Let me first complete this line. Function call operator, when overloaded, does not modify how functions are called. Rather, it modifies how the operator is to be interpreted when applied to the objects of given class type, which is exactly what I said, that when these brackets will come along with the objects of a class, okay, then you have to specify some particular behavior that you are going to define in the class, or you can define, some function. But in this case, you cannot define friend function. Please remember one thing. If you are overloading this subscript operator, these brackets, okay, or assignment operator, or this class member access operator, along with these four operators, if you are overloading, these can only be done by creating member functions. You cannot create friend functions for overloading these operators. Okay, you have to take a note. These can be overloaded using member functions. Fine. So we have already done this. Now we will do this. These, I think I have covered this also, but recently we discussed that we have to do these only. So you just revise this also, right? This I'm not doing in class, but if you face any issue, you can contact. So here, if you see, I have created a sample class. In this class, there are two private data members with the name val1 and val2. Just point me wherever you feel that samajh nahi aaya, just point me, okay? Then in the public section, I have declared two constructors, if you can see. Yes, what is this type of constructor? Speak up, what is this constructor? Yes, this is a default constructor, right? So this constructor will be invoked when you create any object in main program, right? This is again a constructor, but it is a parameterized constructor, which is very clear to us. Now this is something which is operator overloading. Okay. So what I'm doing here is I'm declaring and defining an operator function. Which operator function? This particular operator function. So what is the way to declare it? You have to specify the return type. So my operator function is supposed to return an object of type sample. So the return type is sample. The name of the operator function is this. Again, I'm repeating, the name of operator function consists of two things: operator keyword and the operator that you want to overload. Right? Then there comes the arguments. So in this operator function, I'm taking 3 arguments and all 3 are integers, right? So I've just put some random calculation inside this operator function. I've created an object of class sample, which I'm supposed to return. Okay, that is why I have put a return type sample, because I want to return some object, and that object I'm creating only inside this operator function, right? Clear? Any doubt till here? In the end, I'm simply putting a display method that is displaying the val1 and val2. But किसकी value 1 value 2 display करेगा? जो भी object display function को call करेगा, ये उसके val1 और val2 display करेगा. Okay. So let's come to the driver program. I've created 2 objects, S1 and S2 of type sample. S1 I have initialized with the values 11 and 10. So for S1, the parameterized constructor will be called this one. And for S2, the default constructor will be called, and both val1 and val2 of S2 will be initialized to 0. Yes, any doubt till this line? Please speak up. So after that, I've just put a random statement s1.display. I don't think I need this line. I'm just omitting it. I'm interested in this line. So what I've done is S1 equals to S2 equals to S1, and the bracket I have given 3 integer values. Now what's happening here? Now this is basically invoking the operator function. Invoking operator function. Object के नाम के साथ यहाँ पे ये brackets आई हैं, और brackets में आपने 3 arguments दिए हैं. So basically it is a call to this particular function, if you can see. Right?
So if you display now s2 dot display, what it will do? Yes, s2 में क्या आ जाएगा? ऑपरेटर फंक्शन एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट की वैल्यू में a plus c plus 10 कर देगा, ठीक है, एंड val2 में b plus c plus 100 कर देगा, something, anything. Then it will return that sample s object and that will be returned to s2. s2 के वैल में वही होगा जो s के वैल में है, और s2 के वैल में val2 में वो होगा जो s के val2 में है, right? Is this clear? Yes, speak up, please. Okay, let's just run it once. Okay, so it displayed me these values. What I'm interested in this function call, operator function call. So let's see the error here. So can you read this error? No matching function for call to object of type sample. And what it was looking for the operator function, right? तो आप डायरेक्टली ऐसे ब्रैकेट्स नहीं दे सकते ऑब्जेक्ट के साथ, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है? Again it will throw some error. No matching function call to object of type sample. Clear? So you just try 1-2 codes related to this function call operator. Okay. If you have any doubts, please let me know. Otherwise, I'll proceed to the next topic. This thing is important. You can take a note or you can take a snapshot. This entire line. You need some time to copy it down, or you're taking a snapshot. Okay, fine. This topic is again very important, which is the last topic of operator overloading, which is type conversions. So I think all of you are familiar that how type conversions are done for primitive data types, right? You remember in C? Yes. What are primitive data types? Like int, float, character, you know? And if you encounter these type of statements in your code, what happens? Suppose you have specified int m. Okay, you've specified int m. M is a variable of type integer. X is a variable of type float, and you have provided a value to this variable x, which is 3.14 something. What will happen here? You are writing m equals to x. And if you carefully observe that to the left-hand side of the assignment operator is an integer value, and to the right-hand side, there is something float. So data types of both the variables on left-hand side and right-hand side are different. So what will happen in this case? The compiler will perform an automatic type conversion, and that depends on certain rules. Okay. Now here, this assignment operator is causing the automatic type of conversion. Okay. This assignment operator is doing the automatic type conversion. How it is doing the type conversion? Whatever is on the right hand side is converted into the type of variable which is on the left hand side. I'm repeating again. How the assignment operator cause type conversion? Whatever is the type of the variable on the right hand side of the assignment operator is converted into a type which is of the variable on the left hand side. So in this case, float is converted into integer, right? Float is converted into integer before its value is assigned to this particular m.
What will happen to this fractional part? It will be truncated and only 3 will be assigned to M. What will go into M? Only 3. So you can check it with code also. You want me to run this in a program, or is this fine? Please write in chat box. This is right now I'm discussing primitive type conversion of primitive data types. Is this okay? You understand this thing or not? Yes? Okay. So now, see, these are primitive data types. Hai na? Primitive data types key type conversion is automatic handled by the compiler. But what we are studying in object-oriented programming, we are dealing with objects. And what are objects? They are user-defined data types. आप define कर रहे हो उनको, ठीक है? So क्या आप ये लिख सकते हो? Suppose S is an object. Suppose obj is an object. Can you write obj is equal to some integer value I? How can a compiler automatically convert this basic primitive data type to a class type? No, compiler is not that intelligent that it can convert a basic data type to an class type, and reverse also. If you're writing I equals to obj, again, compiler is not that intelligent that it can convert a class type to a basic type. Moreover, if you are converting object of one class into a type of object of another class, right? This is also not done. This is also not supported. Okay, so this is the case of class type to class type. Obj is object of some particular class and obj1 is object of some other class. So this is not handled by the compiler. Again, this is basic to class type, है ना? Basic को आप class में करना चाह रहे हो. This is again not handled by the compiler. And you can write all these cases. Now here we are trying to convert class type into basic type. Class type to basic type. So it is also not handled by the compiler. So these we have to explicitly handle in our code. If these three situations arise, which three situations? I am again repeating. If you want to convert some basic type to class type to basic type, class type to class type. This is the left-hand side, okay? These all are left-hand sides and these all are right-hand sides of the assignment operator. Please take a note. These are right-hand sides of the assignment operator and these all are left-hand side of the assignment operator. So if you are writing something of this type, this statement of this particular type in your code, then you have to handle it, okay? So today we will first learn how we can convert a basic type to a class type. Means something like obj equals to, say, some integer. So how we can handle this type of conversion, okay? So we will learn this. Now you have to understand that the type conversions for user-defined data types are handled by two ways. You can use constructors or you can use operator overloading. You can use operator overloading. Okay. There is another name of this also. Casting operator functions. आप कह सकते हो इसको casting. You can also say it casting operator functions. But both these methods are not applicable to each of these cases, right? You can use these both methods for basic type to class type, but you cannot use this constructor method for class type to basic type, okay? Again, you can use both these methods for class type to class type. So you just have to remember that when you are converting class type to basic type, then you can do it only by using casting operator function. You cannot use constructor. For other two conversions, for number 1 and number 3 conversions, both these, any one of these two methods you can use in your code, right?
बेटे आप लिख रहे हो ना साइड बाय साइड वॉट एवर आई एम स्पीकिंग, और यू नीड सम टाइम, जस्ट लेट मी नो. यस, बताओ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है. सो ऐसा ना हो कि आई जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग टू फास्ट एंड यू गाइस मिस एनीथिंग. सो दिस हम लास्ट. क्लास 2 बेसिक टाइप का एक बार बता दीजिए. हाँ बेटे, ये तीन तीन चीजें हो सकती हैं जो आपके कोड में आ सकती हैं, इनको आपको हैंडल करना पड़ेगा. ठीक है, इन तीनों को आप ये दो तरीकों से हैंडल कर सकते हो. ठीक है, लेकिन ये जो क्लास टू बेसिक टाइप आप करना चाह रहे हो अपने कोड में, मींस आपके कोड में कहीं आई इक्वल्स टू ओबीजे ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, इसके लिए आप सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, विच इज कास्टिंग ऑपरेटर फंक्शन को यूज करना है आपने. यू कैन नॉट राइट कंस्ट्रक्टर मेथड फॉर दैट. ओके, बाकी नंबर 1 और नंबर 3 के लिए यू कैन यूज ईदर ऑफ दीज टू. फाइन. So now we will learn only about this basic type to class type. Okay. So first we will see how we can achieve this by using a constructor method. Okay. मैंने अभी कोड में कुछ भी लगाया नहीं हुआ कंस्ट्रक्टर मेथड, मैं अभी लगाऊंगी, अभी मैंने लगाया नहीं है. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो, a simple class with the name sample with the private data member A. This is a default constructor and this is a display method which is displaying the private data member A. Simple, right? In the driver program, I have created an object of type sample. I have created an integer variable m and I have assigned 5 to that, then returning. ठीक है, अभी तक कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आई नहीं है कोड में बेसिक टू क्लास वाली. ठीक है, suppose I'm writing s equals to m. Now what is this? What I'm doing is object equals to, I'm writing basically object is equal to primitive या basic data type. अब अगर आप अपने कोड में ऐसी कोई स्टेटमेंट लिख देते हो तो इसको हैंडल करने के लिए आपको कुछ लगाना पड़ेगा. ठीक है, दैट कैन बी a constructor method या operator function. So in this code I will write a constructor for this. Okay, तो वो कैसे लिखेंगे, आपने कुछ भी नहीं करना. कंस्ट्रक्टर मेथड का नाम क्या होता है बेटे, वही जो क्लास का नाम होता है. ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्टर मेथड है. उसके बाद विल राइट हियर, आर यू एबल टू हियर माय वॉइस? माय नेटवर्क कनेक्शन इज अनस्टेबल टुडे, इट इज शोइंग मी. ओके, सिंपल ऐसे लिखना है आपने कंस्ट्रक्टर. आप ध्यान से देखो तो मैंने यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में कुछ पास तो नहीं किया ना यहाँ ऑब्जेक्ट के नाम के साथ में. तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का कंस्ट्रक्टर मेथड है, नाम इसका वही है, इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट जा रहा है. ठीक है, ये मेथड कब इन्वोक होगा बेटे, ये मेथड तब इन्वोक होगा जब आपके प्रोग्राम में ऐसी कोई स्टेटमेंट आएगी. बिकॉज हियर यू वांट टू कन्वर्ट एन इंटीजर टू ऑब्जेक्ट, इंटीजर टू ऑब्जेक्ट. अगर आपके प्रोग्राम में कोई फ्लोट वैल्यू है, say float y equals to 1.2, you have one more object like s1. If you're writing s1 equals to y, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फ्लोट है, तो इसके लिए आपको कंस्ट्रक्टर मेथड आप यहाँ पे लिख सकते हो, सैंपल ब्रैकेट में फ्लोट एनी, देन एग्जैक्टली द सेम लिख देते हैं. अभी पहले इसको मैं कमेंट कर रही हूँ एक बार. Let's first run this code. Okay, so I'm writing s dot display. ठीक है, so you have to remember this thing कि यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट जाएगा बेटे कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर. बेसिकली वो कौन सा आर्ग्यूमेंट है, ये. Got it? So you see the output. So it has initialized, what it has done, it has initialized the private data member of this class sample by using this integer value, but after this statement, okay, s equals to m, which otherwise would not have worked. देखा था ना आपने जब मैंने ये स्टेटमेंट्स नहीं लिखी थी,
ये स्टेटमेंट्स अगर नहीं है आपके कोड में और आप ये लिखते हो तो लेट्स सी व्हाट इज द एरर. कहाँ आ रहा है मैसेज? दिस वन. नो वाइबल ओवरलोडेड है ना, दिख रहा है आपको? सॉरी. Okay, so you have to write this constructor method. This is one of the option that you can write the constructor method. Any doubt in this? Yes. No, ma'am. ठीक है, तो अभी हम इसके लिए ऑपरेटर फंक्शन लिख के देख लेते हैं ना. लेट्स सी. हाँ, मैंने लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ, लिखा हुआ है. आई एम जस्ट कमेंटिंग इट. ओके, you have to try these type conversions on your own. Right, so let's see this code again. The same, not the same program, but the objective is to convert a basic type to a class type, right? But now we are not using constructor. What we are using is we are using the operator function. So here I have created a class time. There are two data members, hours and minutes, right? In the public section there is a display method. Now I have just declared this display method. I'm defining it outside the class. ये हमें आता है define करना. इसके नाम के साथ what we will use name of the class and scope resolution operator. Fine. अभी इसके ऊपर नहीं आ रहे हैं. Okay, I will tell you this. Now let's come to the driver program. Here I have created an object T1 of type time. I've taken a variable duration which is of type integer. I'm taking from user duration. मैं क्या चाहती हूँ? ड्यूरेशन से मुझे क्या निकालना है? आवर्स और मिनट्स निकालने हैं. आवर्स एंड मिनट्स निकालने हैं. So just see this statement. I've written object is equal to integer. So again this is object is equal to basic type. Object is equal to basic type. So what will happen? Now this operator has been overloaded. I have overloaded which operator? क्योंकि टाइप कन्वर्जन्स की जरूरत तभी पड़ती है बेटे जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कुछ ऐसी चीजें डाल देते हो जिनकी टाइप सेम नहीं है. आप पूछो कि मैम यहाँ पे अपने असाइनमेंट ऑपरेटर को ही क्यों ओवरलोड किया है? क्योंकि टाइप कन्वर्जन्स जनरली यही यूज होती हैं जब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर एंड राइट हैंड साइड की टाइप मैच नहीं कर रही है. अब यहाँ पे इन दोनों की टाइप मैच नहीं कर रही. एक तरफ ऑब्जेक्ट है, एक तरफ बेसिक टाइप है. तो या तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मेथड बना लेते. हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया. हमने क्या किया? इस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया. ओवरलोड करना हमें आता है बेटे. वी जस्ट राइट द रिटर्न टाइप ऑफ द ऑपरेटर फंक्शन, name of the operator function which consists of two things, the operator keyword and the operator itself, and in the bracket I'm taking one argument. ये argument क्या होगा बेटे? यहाँ पे it will be basically this duration. ये ऐसे क्यों है मैम? हमने ऐसे पास तो किया नहीं. ये इसका सिंटेक्स है बेटे. अगर आप ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बेसिक टाइप लिख रहे हो और आपने इस ऑपरेटर को ओवरलोड किया है तो ब्रैकेट में जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो जनरली ये बेसिक टाइप ही होगा. ठीक है. So here inside this operator function you can simply do any calculation that you want to do. तो मैंने hours कैसे निकालते हैं? डिवाइड कर लो. मिनट्स कैसे आते हैं? मॉड्यूलर डिवीजन से. ऑपरेटर फंक्शन को मैंने यहाँ डिक्लेयर किया था कैसे? रिटर्न टाइप, नेम एंड ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट दिया था. यहाँ मैंने इसको डिफाइन किया प्रॉपरली. दैट इज व्हाई आई पुट द क्लास नेम एंड रेजोल्यूशन ऑपरेटर. ठीक है. इसके लिए हमेशा आपने याद रखना है हम स्पेंड फंक्शन नहीं बना सकते हैं इक्वल टू ऑपरेटर के लिए. इसके लिए आप मेंबर फंक्शन ही बनाओगे. यही एक तरीका है जिसके साथ आप बेसिक टू क्लास टाइप कर सकते हो इफ यू आर यूजिंग ओवरलोडिंग फंक्शन. राइट. 2-3 बार एक प्रोग्राम बनाओगे ना, सेम प्रोग्राम को 2-3 बार टाइप करोगे तो थोड़ी सी चीजें समझ में आने लग जाएंगी.
बिना टाइप करे खुद से, बिना रन किए, सिर्फ ऐसे सुनने से यू विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड. So this is one way how you can invoke that overloading function. What is the another way? हमें पता है कैसे इन्वोक करते हैं बेटे, ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर लगा के. ऑपरेटर फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है ये मेंबर फंक्शन है ना, ये वाला, आप इसको कैसे कॉल कर सकते हो? या तो ये ऐसे कॉल होगा, आपके प्रोग्राम में कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई जहां आपने टाइम टाइप के ऑब्जेक्ट को इक्वल टू कर दिया किसी इंटीजर वैल्यू के, तब ये फंक्शन इन्वोक होगा. या आप इसको कॉल कर रहे हो स्पेशली, कैसे स्पेशली कॉल करेंगे? क्योंकि ये मेंबर फंक्शन है, सो वी कैन यूज सम ऑब्जेक्ट of type time and dot operator, and then we can specify the name of the function, and in the bracket you can pass the argument. यहाँ पे हम एक्चुअली में कॉल कर रहे हैं, उसको कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे भी कॉल हो रहे हैं, बट ये थोड़ा डिफरेंट तरीका है. both these ways will work. ठीक है, both these ways are equal. आपको जो समझ में आता है इन दोनों में से, जो आपके दिमाग में फिट बैठता है, आप उसको ट्राई कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो. ठीक है बेटे, सो इसको रन करके देखना है, कर लेते हैं. सो ड्यूरेशन इन मिनट्स. ठीक है, सो जब आपने जो फर्स्ट वाला आउटपुट आया बेटे, ये वाला T1 डॉट डिस्प्ले जो आया, दैट वाज बेसिक टू दिस, ये रहा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग. दिस इज 2 hours and 16 minutes. ठीक है, उसके बाद हमने फिर से इन्वोक किया था यहाँ से, ये देख रहे हो आप, ऑब्जेक्ट T1 असाइनमेंट ऑपरेटर सेकेंड मेथड. तो अगेन इट गिव मी 2 hours and 16. आप ड्यूरेशन को यहाँ दोबारा इनपुट भी करा सकते हो, आपकी मर्जी है. ये जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे कैलकुलेशंस डालनी है. मैं फिर से बता देती हूँ, आप ओवरलोड कर रहे हो किसी ऑपरेटर को, तो आप ओवरलोड फंक्शन के अंदर कुछ भी ऑपरेशन डाल सकते हो जो आपका मन करता है, वट एवर सूट. आप चाहो तो यहाँ सिर्फ एक सी आउट स्टेटमेंट लिख दो. दिस ऑपरेशंस आर डिफाइंड बाय कोडर, राइट, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द एप्लीकेशन.